back with another exciting, wonderful hero who is working actually in aviation industry in a very different or dynamic department. I must say customer services का हमने नाम सुना है, लेकिन we don't come across with a lot of different people who are working in aviation in customer services. So we are having Miss Sobia Sabir with us, and she is working in field since 2014 as customer service agent. Currently she is working in ASSL as operation manager, assistant operation manager, and she has extensive experience of working with Fly Dubai Airlines, Serene Airline, Air Blue, and Comsat Internet Services. So currently she is with charter company. Her experience is very dynamic, and further I would like to officially welcome Miss Sobia. Welcome, Miss Sobia. Thank you so much, Adiba, and thank you so much for having me here in this session. I'm being honored that you invited me here. Thank you so much once again. So, Miss Sobia, would you like to add something to your intro, or कुछ बताना चाहेंगी how your work is different than rest of the people who are working in aviation? Enough interview have we given to the people, and I guess वो काफी था, लेकिन ये है कि different is in a sense that we have listened a lot of things like cabin crew and the pilot. अब माशाल्लाह से like you people are doing in the aviation industry like engineering, but customer services is the part of cabin crew. I was the cabin crew when I started from Fly Dubai. I was at the counter, and then I was being promoted to the supervisor, and then I joined AirBlue, then Serene as a crew. But in customer relation here, we deal VVIP flights, means very very normal एक passengers होते हैं जो कि थोड़े से मुश्किल होते हैं, हम उनसे ज्यादा मुश्किल लोगों को डील करते हैं. So this is a bit different here. और ये कि मतलब दिस इज अ प्राइवेट सेक्टर, मतलब आपका जनरल एविएशन है और इन लोगों को डील करते हैं, दैट्स इट. और थोड़ा सा जरा सा डिफिकल्ट होता है, यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉन्शियस, और आपको डिमांड्स इनकी जो है अपने दिमाग में रखनी पड़ती है, एंड यू हैव टू बी विजिलेंट. दैट्स इट. Thank you so So मैं much. यहाँ पे can I would really need to ask you कि जहाँ पे we have seen your professional experience till now, you started off with Fly Dubai जैसे आपने कहा. Can you please also give us an outlook of your education as well? Sure. When I was in Fly Dubai, I did my bachelor's in English literature, and after that, I was pursuing my MBA. And now I'm pursuing my MBA aviation, inshallah. Soon after 2 years, if 1.5 years, it will be completed. And when I joined aviation field, I was just a bachelor's person. I didn't know about anything about anything. Kuch time ke liye I just quit, but it was something missing in my heart. एंड देन एट द टाइम कि मुझे पता चला कि एब्रू इंटरव्यू ले रहा है, आई थॉट कि ये ग्राउंड के इंटरव्यूज ले रहे हैं. दैट वाज अ सडन थिंग. आई वेंट इनसाइड और मुझे पता चला कि भाई ये इंटरव्यूज इस चीज के लिए नहीं हो रहे, तो केवल के लिए हो रहे हैं. और मुझे मुझे भी तक याद है, मिस लिब्राटा डिसूजा एज नॉन एज लिबी, को नहीं जानता लिबी को, लिबी और सर मकसूद थे उस वक्त, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप जो है यू आर क्वालिफाइड. आई वाज सरप्राइज कि मैं किसी और चीज के लिए आई थी और मैं जा किसी और चीज के लिए नहीं हुआ. मैं आई न्यू कि मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी इस चीज को, जब मैं घर जाके बताऊंगी. उसके बाद उन्होंने मुझे धक्के से बोला भाई ये आपका मेडिकल है, आप जाए सीएमएच में मेडिकल करवाएं और आ जाए. और मैं सुबह से निकली हुई इंटरव्यू के लिए किसी और चीज के लिए, और शाम में मैं अपना मेडिकल जो है वो करवा के और मैं घर पहुंची हूँ, फोन की बैटरी डेड, और घर जाके मुझे अपनी मदर को बताना पड़ा भाई ये हो गया, अब मैं ज्वाइन कर लूँ. तो ये Wonderful, वहां से. wonderful. Wonderful. So we are so having some insight in what you do and what your education is. Let's get into the formal question of what does your usual day look like, because you are not in typical department. यानी कि रोजाना आपका different हो सकता है task हो कुछ something exciting. So what does your usual day look like? I'm newly married, so I have to take care of my husband too. So पहले वो task पूरा होता है, फिर office जाके every day is different from other. Because one day if you are going on a flight, or if you are handling the passengers, the second day you are planning and strategy making and you are learning. Of course, aviation is a learning field and you study on daily basis. So every day is different, because if one day there is a flight of something very special from the business tycoon, and second day there is a politician, and third day there is some embassy people. So every day is different because the task is different, the people are different, and their demands are different.
और आपको अलग अलग तरीके से फिर आपको अपनी एक छोटी सी मीटिंग डेली रखनी पड़ती है टू एजुकेट योर स्टाफ। मेरे जो जितने भी स्टाफ वगैरह हैं उसमें पोर्टर्स आ जाते हैं, आपके ग्राउंड स्टाफ आ जाते हैं, बाकी सब उनको बताना पड़ता है ये चीजें हैं, इस तरीके से जाना है, तुमने यहाँ पे खड़े होना है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, कोई मसला हो जस्ट डू मी अ कॉल, जस्ट एक कॉल कर देना मुझे। और फ्रॉम ड्राइवर टू माई पोर्टर्स एवरीवन, हर चीज जो डिफरेंट होती है। और व्हेन वी आर लर्निंग, सो आई एम लर्निंग फ्रॉम माई चीफ पायलट ऑफ कोर्स, सो उन पायलट्स के दरमियान रह के उनके साथ पढ़ना इज समथिंग एक्साइटिंग। तो मैं बस यही सारा दिन होता है मेरा। और कभी ये होता है कि थोड़ी बहुत चिट चैट चल जाती है सबके साथ, अपनी ऑफिस कलीग के साथ, और हमारे पास लड़कियां बहुत कम है, सो आई हैव टू टॉक टू देम ओनली। तो भैया ऑब्वियसली आपने काफी सारे हमें चीजें गिनवा दी हैं कि किसी दिन आपको किसी को डील करना पड़ता है, किसी दिन किसी और को डील करना पड़ता है। What would excite you on a very on a Monday morning? या मंडे मॉर्निंग छोड़े कोई एक पूरा वीक का आपका दिन है, what is that one thing that you know that the other day you're going to actually go on work on it? तो कौन सा ऐसा मौका होता है या कौन सा ऐसा टास्क है जो आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करता है? टू लर्न अबाउट बिग बर्ड्स। क्योंकि अगर मुझे पता है कि इफ देयर इज माय क्लास और आई हैव टू गो फॉर अ टेस्ट, तो दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग कि मैं अपने बेड से जंप मार के आई कैन जस्ट गेट अप। और सेकंड थिंग इज कि आई लव टू वर्क विद एम्बेसीज पीपल्स, बिकॉज वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं। अगर आपको पता है कि आप उनकी फ्लाइट डील कर रहे हो, तो यू जस्ट लव देम ना, मतलब वो इतने अच्छे होते हैं। मुझे मतलब अच्छा लगता है। आई स्टिल रिमेम्बर कि one of my passenger, he just handed me one thing. I thought ये मुझे पता नहीं क्या दिख जा रहा है sometimes, because अगर मैं passenger handle करें sometimes I have to fly too, और मैं flight पे थी और उसने मेरे हाथ में ऐसे पकड़ा दिया, and that was a lapel pin of something very their prestigious thing. I cannot name the organization because it's very different. तो उस मैंने it was from Law and Order. तो मुझे उस वक्त वो बहुत अच्छा लगा. That is why I just love, because every day you learn from them a lot. So learning is the best thing. वंडरफुल सोबिया। आपकी इतनी एक्साइटिंग फ्रॉम डे to day routine to your task and all that you do seems like so matlab involving and indulging. So would you like to tell us what are your personal or professional accomplishments that are you most proud of? Yeah, you think it's a different thing and that you have done or achieved or trying to get it. If you ask my personal thing, then my in-laws, of course, I'm extremely blessed to have them, and my life partner, he's such a supporting person. Means मुझे कभी भी किसी ने नहीं रोका कि ये नहीं करो वो नहीं करो, कहते शाबाश, do it, go for it. तो माशाल्लाह. जहाँ भी जाना है, जो भी करना है करो। और जो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हैं कि मैंने अपनी इंटेग्रिटी पे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी भी अपनी प्रेस्टीज को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, and always being respected. Or sometimes, you know, if people comes in your way कि ये नहीं करो वो नहीं करो, I was never demotivated. That's my accomplishment. और मेरे जितने भी लोग हैं, they respect me a lot. That is my I guess that's my accomplishment. और जब feedbacks आ, तो वो मेरी बड़ी एक खूबसूरत सी चीज होती है। प्लस फिर वही आपकी मतलब आपका रिवॉर्ड, आपका अवार्ड, एवरीथिंग इज लाइक दैट। सो आस्किंग अबाउट योर अकम्पलिशमेंट्स इसी के साथ एसोसिएट हो जाता है, जैसे आपने कहा कि यू डिडंट गेट डीमोटिवेटेड बाय पीपल और देयर एडवाइसेस और व्हाटएवर दे वर सेइंग. सो did you have any time that you were not pleased with your work, or was there because it happens with the people who are doing so much, who are involved with managing teams, and your work demands a lot from you. So has there been a time jahan pe you are not pleased with your performance or with your work, and it happens? So would you like to tell us, did it happen? First of all, when I was not in aviation, that was my unhappy time, because उस वक्त अच्छा I didn't know कि मुझे क्या चाहिए लेकिन मुझे वो satisfaction नहीं होती थी, कुछ missing लगता था। और उसके बाद aviation में आने के बाद a lot of time, because मुझे thyroid था and I didn't know it, और I was a bit slow। तो वो मुझे उस वक्त I was not satisfied with my work। मुझे ऐसा लगता था कुछ कमी है। She's doing well, she's doing well। और फिर जब कोई आपको बोलता है कि भाई you are so slow, you're doing that, you're not doing that, you're not doing that, तो आप थोड़े से मोटिवेट होना शुरू हो जाते हो। तो दैट वाज द टाइम कि मुझे 2017 से पहले तो मुझे ऐसे लगता था कि आई वाज नॉट प्लीज्ड विद माय वर्क, देयर इज समथिंग मिसिंग।
or now I'm so happy with everything. So, if I could connect what Adiba has asked, you identified that you actually got to know that there was a little problem that you wanted to overcome. तो उस टाइम पीरियड में देखें जैसे आपने कहा कि आपको थायराइड का थोड़ा प्रॉब्लम था एंड यू वर स्लो बिकॉज ऑफ दैट नाउ ऑब्वियसली हैविंग एन अननोन कंडीशन कैन नॉट बी ब्लेम्ड ऑन टू एन इंडिविजुअल कि जी आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं लेकिन उस टाइम पीरियड में जब आप डीमोटिवेट उठती हाउ वुड यू कम बैक विद अ स्ट्रॉन्गर मोटिवेशन टू डील विद योर सिचुएशंस क्या था मोटिवेशन फैक्टर उस वक्त मेरा motivation factor to always look at the birds. मतलब when I was a child, there is a story छोटी सी. If you allow me, तो I can tell you. When I was a child, so I look at the sky. I used to look at the sky, and I love to see the birds are flying. और उसके बावजूद भी अभी भी हम लोग ये करते थे कि अपने एयरक्राफ्ट पे खड़े और दूसरे एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ लैंडिंग देख रहे So that always motivated me. I love big birds more than humans. I'm so sorry for that, but this is the truth. I love. Probably Well, you are just being you. Yeah. So yeah, getting back to the question that Fatma has asked, कि वो क्या आपका motivation था which kept you going, or how did you cope with the situation? This is what Fatma asked. He just asked and I just answered कि मुझे big birds I always used to see big birds ना उनकी take off landing Oh, अच्छा उन्हीं से motivation. Yeah, okay. So. So can we talk about you are giving us so exciting answer, so we see something very super in you, like having a superpower and telling us in a way that your super traits have overcame all the situations that you have been handling and doing very well. So do you have any superpower or super trait which you think has helped you reach the position or situation you are, or reach wherever you are? So do you consider something? Do you have? Yes. I'm being so talkative, and I know how to handle the situation in even the worst way. It means if the situation is going in the worst way, I know how to handle it with my talk. So that's my superpower, I guess. Okay, so you And talk I out. always love to learn. Yeah, you are learning easily, and you are talking your things out, and it is always good to talk about the situation that we are doing, and it feels so good to discuss different things and scenarios. What was your breakout moment? Did you have any? Because you told that you were facing something very unknown. If we are facing or feeling something unknown, we are unable to configure or identify what's wrong with us, and like you said, everyone was telling you that she is doing this, they are achieving this. So did you have any breakout moment, and how did you overcome it? It was 2018 November. I cannot forget that moment in my entire life till I die. I cannot, because it was a heartbreaking moment. I just lost my job from Serene Air, and it took me almost a year to overcome it. But anyhow, I did it, and I got the answer after 1 year why it happened to me. After the whole 1 year, the same day, I got the answer. Happens your resilience actually was the key, like you mentioned in your earlier answer. Or it happens that we are granted answers after we keep our patience and keep our cool, okay, and we don't lose our motivation, and we keep on going, okay, this was the thing which because of which you were taken out of that place, and now you are in this situation, we were preparing you. So is there anything, Fatma, would you like to ask, or should we just I would want to ask Sobia about one thing, because Sobia ने पहले भी mention किया that she's good at keeping her team together. She tells people to call her up or connect with her, and then she would be able to navigate them through difficult situations. तो सोबिया कोई ऐसी challenging situation के बारे में बताएंगे जहाँ पे you were faced with a close deadline or possibly a difficult customer, and how did you actually overcome it or help your team overcome? Actually, that is also I cannot forget because that was this funny day. It was Sunday, or a family tea. They were going from Karachi to Sakhar, or they demanded a lift.
जो कि नॉर्मली यूजुअली जो फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं वो नहीं प्रोवाइड करते, लाइक पोकेमोन स्टिकर्स एंड द बिग beers and noodles on flight and cheese pizza and something. And I was just, my boss said, you will go and find these things. And literally I went to 4 to 5 shops, means Imtiaz, Nahi, you can name it. I went myself on Sunday, और मैं सारी ख्वारी काट रही हूँ और फ्लाइट है 2:30 बजे, और मैं सारी चीजें 10-11 बजे से निकल के और सब चीजें ला के और मैं उधर खड़ी हूँ। और एट दैट टाइम समथिंग हैपेंड विद द कनेक्शन, कि जिस लाउंज को हमने सेपरेट लाउंज को बुक किया था, इट इज नॉट ओनली जिना इंटरनेशनल इन कराची, आपके पास लाउंजेस हैं, आप बुक कर सकते हो। सेपरेट लाउंज बुक किया और एंड टाइम पे पता चला कि उनका तो स्टाफ को पता ही नहीं, क्योंकि वो तो कस्टमर ने उनको डील किया हुआ था। अब वहां पे स्टाफ नहीं है, अब सीए को बुलवाया, आधा घंटा वहां पे धूप में हम लोग खड़े होकर ख्वारी काट रहे हैं, ऑफिस से ड्रिंक्स मंगा के पी रहे, और वो सब हमने वहां पे हैंडल किया। और थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड के एवरीबडी फ्रॉम सिविल एविएशन एंड with my staff, everybody was stood by my side, और that happened very well, बहुत अच्छे तरीके से किया। बट दैट टाइम के मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगी, आई वाज अलोन, और उनकी पूरी टीम ही नहीं है भाई, जो लाउंज को पूरी टीम हैंडल करती है वो है ही नहीं माशाल्लाह से, हम ही खड़े हैं, और ऊपर से जो पैसेंजर्स हैं उनके बच्चे बाहर शोर मचा रहे हैं। It sounds so exciting. It sounds so exciting, but we can understand the head over heel situation that you have been facing or going along. You talked twice about your boss. So, is there any lesson you have learned from your this current boss or your first boss specifically? Because we do have a deep impact of our first bosses. Throughout our entire career. So, was there any takeaway from your first boss, or if your current boss you would like to tell us? Yes, my first boss, he was from corporate industry. I was not from aviation industry. I was from the corporate industry, and that was a leather factory. And I was export manager and assistant director plus a merchandiser. So there was my boss, Asim Azhar. He was a very intellectual person, very intelligent, and he used to tell me, okay, if you ever commit a mistake, do not think over it and do not cry like a cranky baby. Just think now how to fix it. Waste your energy on how to fix it. Don't cry on it. So that was the first lesson. And वो कहते हैं कि गिराब में बांध के रख लेना. So I do that always. Wonderful, Sobia, wonderful. We are so excited to hear all these wonderful things. Is there anything, Fatma, would you like to ask, or shall I keep going? Definitely. I was waiting for you to give me like cute to go on and ask Sobia a question. Sobia, आपकी बातों से ये भी पता चला you have been lucky enough to find a mentor in your first boss. Exactly. Right. So I have a lot of mentors in every industry. How many do you think people have played the role of mentors in your life? And specifically, जब आप aviation की बात करती हैं, तो do you think it was easy for you to find a mentor in aviation for yourself? For me, it was very easy because in AirBlue, means I don't think so कि किसी को नहीं पता होगा, Samra Azhar, she is the best mentor ever, and you can find her easily. आप कुछ भी पूछ सकते हैं उससे. लिबी से हमें डर लगता था, लेकिन Samra Azhar, maybe Siraj थी, she's not in aviation industry right now. Carol Christine Sinha, she's also not in aviation. KK Kamal Khatun, she is my mentor, and Sunana Yunus is still my mentor. And these are the people I still can ask them anything, anytime. From the manual, out of the manual, anything. They are my mentors. Wonderful, Sobia. You means you have given energy to our questions. Thank you. Yeah, I've actually become really excited because you've named a lot of females in your mentors. How important, I would connect the next question to it. Yeah, how important do you feel female mentors or female leadership is in aviation industry or even in the corporate world, since आपका दोनों का experience है? How important do you think are female leaders or female mentors or simply having female colleagues in your workplace? देखिए, बारिश का तो पहला कतरा किसी को भी बनना होता है, ठीक है. I was from a background कि मेरे साथ 99% they were the male and I was the only female. So I was a kind of a male of female person. I was the 2-in-1 version. So AirBlue में जब first day, I was the person who used to handle hundreds of people on daily basis, but all the men. और AirBlue की पहली क्लास में
I just stood silent on my introduction, like that. So there is important thing कि और जो हमारी क्लास टीचर थी, she encouraged me, मैम नादिया, but she said कि हाँ, Sophia, speak up, and I was so dumb, I was so naive at that time. और मुझे लगता है कि फीमेल मेंटोर आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको हर चीज में मोटिवेट करे, आपको कि हाँ, डू इट, आई एम एट योर बैक, जस्ट डू इट. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सी हमारी एविएशन में अगर लड़कियां आती हैं तो मोस्टली सबको ख्वाब हो रहा होता है केबिन क्रू बनने का. तो केबिन क्रू बनने के लिए यंग यंग सी बच्चियां आ रही होती है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक ट्रू मेंटर हो जो कि आपको करियर में फोकस करे और बताए व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक फीमेल जिस तरीके से बता सकती है उस बच्ची को, उस तरह से कोई मेल नहीं समझा सकता, बिकॉज शी इज शाय, शी इज न्यू, शी डोंट नो एनीथिंग. Very well said, of telling what to do and what not to do specifically, or you have put it very, you have put it in a very good word के words के जैसे female बता सकती है. So we have talked so much about females and female mentors. So can you please name your one male ally that has been throughout their along with your journey, or या फिर who has helped you a lot in your journey or in your career? So, can you please name one male ally? Can I name two? Yeah, you can. It can be 1, 2, 3, 4, any. Okay. My first boss, I name him Sir Asim Bashir. And second, the most important person of my life is my husband, because he always bucked me up. Sobia, do it. He loved that I am pursuing my career, and he is the person who is with me all the time, every time. So I give all the credit to him that if I am here today, anything, or if I will be for the next 2 or 3 years or 5 years or anyway, anytime, all credit goes to my husband. Inshallah, thank you so much. So, I wanted people, and specifically those who are listening to us, focus on the thing. Ke Sobia is not just talking about all the females only. She has been giving or trying so much to getting good from people, irrespective of their gender. Obviously, you have male, female colleagues, and you have named them very well. So, is there anything, Fatma, would you like to ask? I would just like to add one thing into it. हमारी बात से भी probably the way we are conducting or we are talking or we are exploring with Sophia together. The other thing that we're trying to highlight is how important is it to have male allies with you. And those male allies are going to be equally important in both the places, when we talk about your office or your professional space, and then as well your personal space. When we find allies in our personal and then professional spaces, only then obviously the women have more confidence to grow out and come in front of everybody and do their work at their full pace. So सोबिया, थोड़ा सा कुछ और मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी. आपने earlier career में did you go after specifically when you were a student or you applied for, आपने बताया जैसे आप cabin crew के लिए आपने start में पहले apply किया था. Were there any internships that you went into, or did you do some extra work other than studying, जिसको आपको लगता है that helped you brush away your shyness or confidence build up करने के लिए? नहीं भाई, मैं शुरू से ही बहुत ब्लंट हूँ. नहीं, मैंने कभी इंटर्नशिप नहीं की. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. आई एम स्पॉन्टेनियस एक्चुअली. अच्छा नहीं, एक्चुअली मेरी मदर जो थी, शी यूज्ड टू से मुझे जाना है तो खुद जाओ, कोई तुम्हारा कोई नौकर थोड़ी है जो लेके आएगा, जस्ट गो बाय योरसेल्फ. सो मैं शुरू से ही थोड़ी सी, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट आई वाज ब्लंट. तो लेकिन ये है कि फॉर गर्ल्स इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर बिल्कुल न्यू हो ना, और अगर थोड़ा सा इंटर्नशिप कर रहे हो तो यू गेट टू नो दैट इंडस्ट्री. आप बिल्कुल नए होके, बिल्कुल डम होके नहीं आ रहे होते. यू नो समथिंग कि भाई हाँ, इधर से ऐसे होता है, इधर से ऐसे होता है, इधर से ऐसे होता है. अदरवाइज अगर आप जॉब के फर्स्ट डे में आए, डोंट नो एनीथिंग अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द वर्क, तो फिर आपको एक बिल्कुल एक फूल की तरह ट्रीट किया जाएगा. नो मैटर कि जो बंदे आपको ट्रीट कर रहे हैं वो शुरू में आपसे भी ज्यादा फूल होंगे, लेकिन वो आपके फर्स्ट डे पे आपको एज अ फूल करेंगे, अगर उनको पता होगा भी इसको कुछ नहीं आता या जरा से आपने मिस्टेक कर दी. सो इंटर्नशिप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको चांस मिलता है, आई डेंट गेट अ चांस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डेंट गेट अ चांस टू डू माई इंटर्नशिप बिकॉज आई वाज टू बिजी इन सो मेनी थिंग्स. तो लेकिन ये कि इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. 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 तो लेकिन ये कि इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट.
थैंक यू सोबिया फॉर हाईलाइटिंग टू थिंग्स. एक तो ये कि मिस फातिमा का क्वेश्चन का आपने आंसर किया इन अ वेरी गुड वे एंड यू डोंट हैव टू बी सॉरी टू बी योरसेल्फ. एक और चीज़ जो मैंने एक्सट्रैक्ट की आपके आंसर से इज़ योर कॉन्फिडेंस दैट योर मॉम गेव, यानी कि जो फैमिली की आपका अपब्रिंगिंग था, इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग और ब्रेकिंग वट यू आर. सो एक्चुअली जो आपने कहा बहुत कैजुअली कि आप मुँह फटे, नो, इट इज़ द कॉन्फिडेंस दैट यू आर ग्रांटेड फ्रॉम योर फैमिली by saying कि you have to go and you should do all the things by your own self. So thank you so much, Sobia. Let's get to the next question. Sure. What do you think the importance of networking or recommendations are? I would like you to comment on the networking thing because you are involved in a lot of things, or like you said कि you were busy with a lot of things, और जैसे आपने कहा you didn't get time to have internship. So what do you think networking एविएशन इंडस्ट्री में या जनरली भी कितना इम्पोर्टेंट है, और हाउ डज इट अफेक्ट्स पीपल? Honestly, nobody give my recommendation to anyone, but it is somehow it is important because first करे कि अदिबा मैं आपको जानती हूँ, ठीक है, आप मुझे कहते हो कि भाई यार देखो ये लड़की है और ये चीजें इसकी हैं, अब मैं देख रही हूँ कि यार ये मेरिट पे तो उतर रही है, हाँ ठीक है, ये तो अदिबा जानती है, बस ठीक है, हाँ सही है, रिकमेंडेशन आ रही है, चलो कर लेते हैं, ठीक है. अब एक बिल्कुल न्यू बंदा है, अब जैसे ही वो आएगा तो मैं सोचूंगी यार पता नहीं कैसा काम करेगा, है अच्छा कि नहीं अच्छा. तो दीज आर समथिंग कि जब आप बिल्कुल खुद से जाते हो, लाइक मतलब मेरे जैसा कोई फिजूल इंसान जाएगा तो उसको थोड़ा सा ना थोड़ा शक की नजर से देखेंगे कि हाँ भाई ये पता नहीं कर सकती है कि नहीं कर सकती, वी डोंट नो, चलो लेट्स ट्राई, देखते हैं, करते हैं तो सही है, नहीं तो फिर देखा जाएगा. और अगर मुझे किसी ने रेकमेंड किया तो कहेंगे हाँ यार फलाने ने रेकमेंड किया था, उसकी रेपुटेशन अच्छी है तो ये भी अच्छा काम करेगी. सो दीज आर द टू थिंग्स कि आपको शुरू में मतलब जाके या तो आपका ये होता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है और बाद में आप डम निकल आते हो, लेकिन आपको उसको फिर मेंटेन रखना पड़ता है, या फिर आपको डम समझा जाता है और आप फिर थोड़ा बहुत अच्छा काम करके दिखा देते हो, या आपकी किस्मत अच्छी होती है तो चलो आपने जो आया काम वो आसान हो गया, नहीं तो किसी ने सिखा दिया और आपने कर लिया. So wonderful. You have again given a very smart answer के मतलब you have this trust factor when you recommend someone, or you have to maintain that trust by performing up to the mark, or we have to keep this thing alive. So Sobia, I would like to ask, you are doing so much and you are involved with a lot of different people. So how do you give back to the society? Is there anything, any initiative or any volunteer work that you do? So what is your stance on community building, and is there any way you are giving back to the society? It can be anything, not Yes, of specific to aviation. Community building is very good because in my earlier days I used to involve with NGOs and that was all voluntarily. हम लोग मतलब brick आपने शायद सुना हो brick houses जो होते हैं जहाँ पे ईंटें बनती हैं. I went there to just to get an interview with them और हम लोगों ने उसको पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी. और एविएशन में ऑफ कोर्स आपको वॉलंटरली करना ही पड़ता है. आपने एक टर्म सुनी होगी कि the one who sees the fire will be the firefighter. तो आपको इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं हर जगह पे. That is the key to your success. और आपको इनिशिएटिव हर जगह पे लेने पड़ते हैं. Otherwise you are failed. You're nothing. You cannot do anything. Wonderful, wonderful. Fatma, would you like to ask something or add up to something? My question would be, since Sophia has told us so much about all of her previous experiences and how she's obviously very enthusiastically, enjoying her work. और सोबिया ने कुछ टच किया हमें अपने वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस के साथ भी. सोबिया, where do you see yourself? बड़ा क्लीशे सा सवाल है, but you need to ask you that obviously. Where do you see yourself in the next 5 years? In 5 years. क्या बिल्डअप करना चाह रही होंगी अपने लिए प्रोफेशनली, पर्सनली? कुछ शेयर करें हमारे साथ. I'll be the CEO of a company. Inshallah, inshallah, inshallah. Of course, मतलब I see myself as a good human being. और community building का, sorry, I want to add one thing that I have my page and I used to teach and guide people. Wow. क्योंकि हम जब आए थे ना एजुकेशन में, so we don't know anything. जब फर्स्ट डे हमारे पास इतना मोटा मैनुअल हमारे पेज उस पे टेबल पे रखा गया था, तो हम लोग पागलों की तरह यूं देख रहे थे, हैं इसको पढ़ना है हमें. We didn't know anything. So I'm just guiding other people. और second question was कि second question was that, what was that? Next 5 years में कहाँ देखती हैं आप अपने आप को apart from a CEO?
Apart from the CEO. Soon you'll hear a good news from me as well. So you'll Inshallah. see, inshallah. Inshallah, and we'll be having another session, inshallah, with Sobia. So, Sobia, you have responded to our questions so wonderfully, and you have given this additional energy to the session, and we would like to give back you this energy with some of our questions, which are known as rapid fire for fun. So I'll be asking you this time. Fatma will be asking you 5 questions, or we just want you to be yourself, just like you have been in entire session. So over to you, Fatma. Let's start then without any delay. So yeah, I'm going to ask you quick 5 questions, and we are expecting some really fun, energetic Fun. answers. जैसा कि पूरा I'll try. So if you were not into the current career, what would you be? Sorry. अगर आप अभी अपने करंट करियर में ना होती, प्रोफेशन जो आपने लिया हुआ है वो आपका ना होता, तो आप क्या कर रही होती जिंदगी? I would be writer. Right. राइटर, Good. Okay, so if you would, okay, I'm going to have a very interesting answer, I guess. So, Sophia, if you get to invent one thing, what would that be? Sorry, your just voice is a bit low. Okay, if you had to invent one thing, what would that be? Sorry. If you get to invent अगर one आपने कुछ thing. Okay. तो आप क्या चीज invent करती? I would love to invent one thing, and that is regarding to the aircrafts. Okay, उसमें जो fuel होता है, when it burns, so it causes pollution in air. So I would love to invent one thing कि जिसकी वजह से ये eco friendly हो जाए या फिर air pollution खत्म हो जाए. I would love to invent that. I would like to answer to this question Okay, after Sophia, her can session. you name some resources? Yeah, can you please name some aviation resources for us that you use frequently or you feel that are very useful? Yeah. I used to open the career websites and the other websites of all the international airlines, aircraft, and some of the private jets. Means there are a lot of. I'm from the general aviation, so I used to open a lot of websites from general aviation from entire the world. So those are my favorite resources. और कुछ crew की books होती हैं, कुछ sometimes books आती हैं आपके pilots की. I used to read them. Wonderful. अच्छा, Sophia, अपने कोई ideal के बारे में बताएंगी? A favorite aviator probably or an ideal that you look up to? Yes, Sir Sharik Hassan. He is the बाबा क्या कहते हैं aviation. और जिस पायलट से पूछो तो वो कहते हैं कि he is my teacher, he was my teacher. And Sir Tariq Aslam, he is now in Serene. And Sir Asif, because Sir Asif was the person I cannot forget him, because जब भी कोई पैसेंजर अगर गलत बात कर रहा है and he knows कि मेरा क्रू ठीक है और वो पैसेंजर गलत कर रहा है, तो वो कहते थे जाओ जाके बताना, जिसको बता दो सीईओ को, नेक्स्ट टाइम हमारी फ्लाइट में फ्लाइट करना, मेरी बच्ची सही गई है. तो इसलिए एंड सर फहद, आई लव हिज लैंडिंग. उनकी लैंडिंग आपको नीचे देख के पता चलती है अच्छा लैंड हो गए, ठीक है. और ये छोटे एयरक्राफ्ट की बात कर रही हूँ. दैट इज व्हाई दे आर माय फेवरेट एविएटर्स. Thank you, Sophia. अच्छा जी, last question होगा, Sophia. If you're given a chance to change one thing globally, what would that be? I would like to change people dishonesty in lives. Wonderful, I guess that sums Sophia. it up for us, Aditya. Thank you so much, Sobia, for a wonderful session. And let me tell you, the problem you asked about, you would like to invent something to make the fuel contrails friendly. So let me tell you, our member, Dr. Sara Qureshi, she is working towards catering this problem, and you can hear or see more about her initiatives on our page, Royal Aeronautical Society. Thank you so much, Sobia, I will for send my love to her. Send my love to her. thank you so much, Sobia, for giving us your time and giving this energy to our sessions. Thank you so much, and we will be having you in next sessions, inshallah. All the best for your initiatives and all that you do. Thank you so much. Thank you, Adiba. And after looking at the faces of dull males,
I'm just watching this playlist, so that is why my mood is so good. Fatma, compliment goes to you and your wonderful aura. Thank you so much, Both of you, Fatma. both of you. Thank you so much, Sobia and Fatma.